We request our dignitaries to take their seats, please. If still and video photographers can move to their designated positions और मंच के आगे की जगह आप लोग खाली कर सकें तो हम बहुत अनुग्रहित होंगे. We shall now felicitate and welcome our honorable chief guests and our special guests on the dais. May I now request Shri Salman Khurshid ji to come up on stage and welcome the Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji. I request Shri Vivek Tankha ji to come up on stage to welcome our leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji. This way, sir. From the front. Shri Vivek Tankha ji to felicitate Leader of Opposition Shri Rahul Gandhi ji. Shri Haran Rawal ji to welcome the Chairman Dr. Abhishek Manu Singhvi ji. And Shri Omar Hoda ji to welcome Shri Muhammad Ali Khan ji. Good morning, namaskar, and a very, very warm welcome to the National Legal Conclave being organized by the Law, the RTI, and the Human Rights Department of the Indian National Congress. The theme of the conclave this year is Constitutional Challenges, Perspectives and Pathways, and this couldn't be more aptly titled at this juncture of our polity. The most defining character of our republic is the fact that almost 80 years ago, we as a young independent nation committed ourselves to the Constitution, which has been our guiding light for large part of independent history. We were formed as a democratic country with a universal adult franchise for every Indian citizen of voting age. We were organized as a federal structure that had separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary. इस बात का गर्व है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद आजाद हिंदुस्तान में हमारे संविधान ने इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को, इस देश के एक दिहाड़ी मजदूर से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक को एक बराबर का हक दिया, एक बराबर का सम्मान दिया और एक ही वोट की ताकत दी। इस देश के संविधान ने सदियों से वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े उन तमाम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। आप किस धर्म, किस जाति, किस भाषा को बोलते हो, कैसी आपकी वेशभूषा हो, किस वर्ग के आप हो, किस लिंग के आप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के संविधान के लिए हर भारतीय एक बराबर है। This is the polity that our founding fathers stood for, and we are very, very proud to say that our founding fathers belonged to the Indian National Congress. This is our structure our great Indian Republic was built upon. This is what each one of us inherited, and each one of us here and beyond is committed to defending. Our values have stood the test of time, and these values have shaped us to be a socialist, pluralistic, secular,
and a liberal democracy. ये वही सिद्धांत और आदर्श हैं जिन पर तमाम कांग्रेस की सरकार ने मजबूती से काम किया। एक एक ईंट को जोड़कर 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार अधिकारों की क्रांति लाई, जिसमें मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे बड़े बड़े कानून शामिल हैं और इन्हीं सब के चलते हुए 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा गया। But over the last decade or a little more, as a nation we have witnessed the longest departure in our independent history from our values, our principles, and all that defines us. The secular fabric of our nation has been threatened. The Indian government has attacked the agrarian heart of our economy. After many decades, we are seeing linguistic tussles come to the fore in our republic. We are witnessing an economy that has concentrated more power, more wealth, more land, more resources in the hands of a chosen few. The breakdown of the federal spirit in our constitution has been unprecedented, and the further marginalization of the backward communities, of the Dalits, of the tribals, and the women has been very, very stark. These are precisely the issues of critical importance which will be discussed here at the inaugural session and the 4 others that follow through the course of the day. आज जब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तब SIR के माध्यम से बिहार में वोट की दिन दहाड़े चोरी की जा रही है और इससे गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के गरीबों के उस हक को छीना जा रहा है जो उनका सबसे ताकतवर हथियार है, और वो है वोट का अधिकार। इससे पहले कि मैं सम्मानित वक्ताओं को आमंत्रित करूं, मुझे गर्व है कि आज विज्ञान भवन के सभागार में वो लोग मौजूद हैं जो संसद में, देश के तमाम कोर्ट रूम में और अन्य जगहों पर बुलंदी से लोगों के अधिकार के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। The Congress Party doesn't just have an exemplary political leadership, but we also have the deepest talent and bench strength from the trials and the district courts of the land to about 700 magisterial district courts to 25 high courts and to the apex court, the Supreme Court right here in New Delhi. Without any delay, may I now request the Secretary of the Department of Law, Human Rights and RTI, Shri Muhammad Ali Khan ji, to come and deliver his welcome address. Good morning, everybody. Honorable Congress President, Honorable Leader of Opposition Shri Rahul Gandhi ji, Honorable Chairman Saab, members of the CWC, members of Parliament, Honorable General Secretaries, and Secretaries of the Congress, and my fellow delegates. It is an honor to welcome you to this session. My friends, सन 2011 की बात थी, मैं जयराम रमेश जी के साथ राहुल जी से मिलने गया। विषय था भूमि अधिग्रहण कानून, और जो मसौदा जयराम जी ने राहुल जी को दिखाया उसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के प्रावधान दिखाए राहुल जी को। राहुल जी ने सुना उसके बारे में और सिर्फ एक ही सवाल पूछा, इसमें उनके लिए क्या है जिनकी जमीन जा चुकी है? What is there in this law for those who have suffered historical injustices? Now, my fellow lawyers know how difficult it is to draft a retrospective clause. But that is where the retrospective clause was born, Section 24(2). Section 24(2) के माध्यम से लाखों लोगों को उनकी जमीन वापस मिली. And they all owe their gratitude to this one gentleman. पिछले साल की बात है, मुझे केसी वेणुगोपाल जी आज आ नहीं पाए, मगर आई वुड बी रिमिस इफ आई डिड नॉट टेल यू द स्टोरी. मुझे उनका फोन आया रात के 1 बजे कि कुछ बच्चे गिरफ्तार हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, उनकी मदद कर दो. मैंने सोचा शायद NSUI IYC के लोग होंगे. मैंने वकील भेजे और वो बेसिक प्रोटेस्ट प्रोविजंस थे, केस हो गया क्वॉश. बाद में मुझे अंदाजा हुआ इन बच्चों को तो पता ही नहीं था कि केसी वेणुगोपाल जी ने भेजा है हम लोगों को. वो सोचे थे हमें NSUI या किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है. दैट is another example I want to share with you. And finally, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. हमारे ऑनरेबल CP साहब यहां बैठे हैं. ये 2 साल पहले की बात है. एक आदमी था, वो CP साहब का उसे नंबर मिल गया था और वो CP साहब को फोन करके वो धमकियां देता था. हम लोगों ने पुलिस में शिकायत की, वो ट्रेस हो गया, वो गिरफ्तार हो गया.
अब कुछ दिन के बाद, एज माय फेलो लॉयर्स नो, किसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाना था, तो मैंने नरेश भाई को फोन मिलाया सीपी साहब के दफ्तर में। मैंने कहा नरेश भाई वो गिरफ्तार हो गया, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं, वो स्वीकार रहा है कि उसने किया है, आप कोई किसी को भेज दीजिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। नरेश भाई टोल्ड मी, सीपी साहब ने कहा छोड़ दो, गरीब आदमी है, बेरोजगार है। ये है कांग्रेस, ये है हमारे नेता, ये है वो मिसाल। दीज आर द लैंप्स दैट लाइट आवर वे। Where else will you find leaders who, without seeking the credit for it, will focus only on addressing a historical injustice, will focus solely on the fact that those people who have been deprived have to be given some remedy? Where else will you find this magnanimity towards people who don't deserve it? And they never speak a word about it. ये है कांग्रेस। मेरे सारे डेलीगेट्स आज यहाँ मौजूद हैं। I am honored to be one of you. हर राज्य से आज वकील आए हैं, ऑलमोस्ट डॉक्टर सिंह भी will give the details. But आप सबके सब जो हैं, I am honored and proud to call you my colleagues for a simple reason. पिछले 10 साल में हर कांग्रेसी एक परीक्षा से गुजरा है, और उस परीक्षा में जो सफल हुए हैं वो दो क्वालिटीज के साथ उभर के आए हैं, एक निडरता और दूसरा जिद्दीपन। हर कांग्रेसी जो आज है वो निडर है और वो जिद्दी है। And I find that to be especially true of my fellow lawyers, because I know for a fact that every single one of you has borne a professional as well as a financial cost from being associated with the opposition. I know that for a fact. And yet you stand. मुझे गर्व होता है, I would be remiss if I did not tell this. हर राज्य में जब मैं फोन करता हूं कि हमें वकीलों की जरूरत है, हमारे लोगों के लिए वकीलों की जरूरत है, सिर्फ एक सवाल करते हैं मेरे सहयोगी, बताओ कहां जाना है और कब जाना है? You are the bricks in the wall that stands between lawlessness and the opposition. You are our delegates. और मुझे फख्र होता है, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए that I have you to welcome today. Thank you so much for coming and making this event a success. आप है कांग्रेस। Finally, हम कांग्रेसियों से बार बार आलोचक और समालोचक दोनों पूछते हैं, आप लोगों की विचारधारा क्या है? आप लोगों की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की एक यूनिफाइंग आइडियोलॉजी क्या है? इस सवाल का जवाब हमारे प्रिय राहुल जी ने पिछले 2 साल में क्लियरली दे दिया। When he holds up that Constitution of India without saying a word, that is our ideology. वो है हमारी uniting theory. वो है the umbrella that's under which we all stand together. राहुल जी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप बैठ जाएं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि पिछले सालों में हमारे पास जो चुनौतियां आई, हमने प्रयास किया है कि हम अपनी तरफ से that we stand with you to the best of our abilities. राहुल जी, हर वकील जो यहाँ मौजूद है, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, हर वकील जो यहाँ मौजूद है, I am assuring you, will follow you wherever you lead. We stand behind you. We are proud of you. We are honored to call you and Kharge Saab our leaders. You have set a remarkable example for us. And my friends, वो ये मत भूलिएगा, जब भी अगर आपके दिल में डाउट आए, जब भी आपको सोच में आए कि कैसे आगे बढ़ेंगे, we are just one people and we are in the opposition. No, no, no. We are more than that. We are the Congress. हम है कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी। और बिल्कुल हम हैं कांग्रेस और इस विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं। I now welcome the Chairman of the Law, Human Rights and the RTI Department, Dr. Abhishek Manu Singhvi ji, to kindly deliver the Chairman's address. As one of India's most distinguished lawyers, Dr. Singhvi has deftly handled high-profile cases with eloquence and precision. एक वकील के तौर पर अपने लीगल और बतौर राजनेता अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए विख्यात सिंघवी जी की लगातार बढ़ती मांग और स्पेशली आजकल के दिनों में इस बात का सबूत है कि द्वेष और प्रतिशोध की राजनीति में संविधान और कानून के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और आप जैसों पर यह जिम्मेदारी है कि इस जटिल परिस्थिति के आगे रास्ता निकाला जाए। डॉक्टर सिंघवी जी। Honorable Congress President Kharge ji, Honorable Leader of the Opposition Rahul ji, Treasurer Makin ji in absentia. I get a little worried whenever our Treasury is absent. It's a very seriously dangerous sector to be absent in. We are trying to trace him out. My Department Secretary Mohammad Khan, Supriya ji, respected members of the Congress Working Committee, Honorable Chief Ministers, all 3 of our Chief Ministers are here, I'm proud of that. Former
Union Cabinet Ministers, former Chief Ministers, General Secretaries, PCC Presidents, Members of Parliament from both houses, State in charges, distinguished colleagues, delegates, friends, and above all, lawyers, human rights and RTI activists from every nook and cranny of India. And I'll give you some points in a moment about that. Friends, when I last had the privilege of heading this composite department over 15 years ago, at a similar national convention at this very same venue in 2010, in the presence of then Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the then Congress President Srimati Sonia Gandhi, whose presence I sorely miss today, I had said that the only sentiment I have is one of being overwhelmed. I experience exactly the same feeling today. Kharge ji has remarkably altered the date of a medical operation in his immediate family, originally scheduled today morning, to honor us by his presence. His commitment to Congress causes is truly phenomenal. Rahul ji agreed immediately on my one call to block his morning amidst his frenetic schedule. We have 42 top Congress functionaries speaking today, all readily participating at my request. That includes all our sitting CMs, each one of them, and a host of the senior-most leadership across all senior designations who will embellish our day-long proceedings today. Over 2,200 lawyers are here across the length and breadth of India. The only geographical areas not represented are Andaman, Nicobar, Dadar Nagar Haveli, Lakshadweep and Sikkim. As I speak, there are 1,650 lawyers in this hall and in hall 5 and 6 of this building, Vigyan Bhavan, where we have live screening. That is 1650. We have at least 200 more crowding the aisles of all the three halls. And I regret to say, but I'm very happy to note that there are about 600 or 500 odd outside who are either going to be accommodated later or who are being directed to live streaming at AICC headquarters on Akbar Road and to our new auditorium at Indira Bhavan. Both are open for them. माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, वकील समुदाय एवं मानवाधिकार और पारदर्शिता के सिपाही हर समाज का प्रबुद्ध और जागरूक वर्ग होता है। विश्व में ये समूह फोर्स मल्टीप्लायर होता है। इस वर्ग के हर एक व्यक्ति में शक्ति है कि न्यूनतम 1000 लोगों को प्रभावित करे। ये सिर्फ संयोग नहीं है कि 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वोमेश चंद्र बनर्जी ने, जो एक सफल वकील थे। हमारी पूंजी, हमारी जीएनपी गांधी नेहरू पटेल का सबका कानून से बहुत निकट संबंध रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की हर कड़ी जुड़ी है इन तबकों से। राजेंद्र प्रसाद जी से लेके बाबा साहेब अंबेडकर, राजगोपालाचारी साहब से लेकर लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय से लेकर सीआर दास, और आपको जिनको रोचन इंटरेस्ट हो, अगर आप रुचि हो तो देखिए मोतीलाल नेहरू के इनकम टैक्स रिटर्न्स 1920 और 30 के। वो हिंदुस्तान के सबसे सफल वकील थे जिनका योगदान, वो प्रिवी काउंसिल जाया करते थे बहस करने, उनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में कितना रहा है। I stand before you not just as a lawyer or a parliamentarian, but I stand before you as a deeply concerned citizen of the Republic of India. A republic born out of dreams dreamt
during the darkest nights of colonial oppression. A republic scripted not merely on paper, but in blood, sweat, and tears of our freedom fighters. A republic whose constitutional soul today stands tested, tarnished, and threatened. The title of today's event, Constitutional Challenges, Perspectives, and Pathways, could not be more timely, more urgent, or more consequential. For the truth is bitter but unavoidable. We are living through a moment where the Constitution is not merely ignored, it is being twisted into a tool of domination. The very values that gave us democratic breath, liberty, fraternity, equality, justice, are all now gasping for air. Let me remind this august gathering that the Constitution of India is not an administrative manual. It is a moral mission. It is not just a legal contract between citizens and the state. It is the living, beating heart of our democracy. And in crafting of this magnificent document, the Congress Party did not merely play a role. We were its very womb. It was the Indian National Congress that envisioned it, enabled it, and enacted it through the vision of Nehru, the resolve of Patel, the intellect of Ambedkar, and of course, above all, the moral compass of Gandhi. Let it be recorded without hesitation or humility that the Congress Party is the constitutional conscience keeper of this country. It was Congress that translated freedom into rights, agitation into administration, and revolution into institutions. It was the Congress that gave India the stirring words of our preamble, the directive principles, universal adult franchise. It was the Congress that made India a democracy not just in word or form, but in spirit. And today it must fall again to the Congress to protect, preserve, and if necessary, revive the soul of the Constitution. But friends, what exactly is the challenge we face today? The challenge is not simply one of bad governance or poor economics. It is a deeper, more insidious crisis, the deliberate dismantling of constitutional values under the garb of electoral majority. The Constitution has checks and balances. They are being replaced, unfortunately, with checks spelled C-H-E-Q-U-E-S and bulldozers. The Constitution has rights and remedies. The ruling dispensation offers us raids and rhetoric. The Constitution speaks of liberty. They weaponize loyalty. This is not governance. This is the gaslighting of the Republic. जब लोकतंत्र को सिर्फ वोट तक सीमित कर दिया जाए और संविधान को सिर्फ एक प्रतीक बना दिया जाए, तब समझ लीजिए कि खतरा कागजों से निकलकर नियतों में घुस गया है. Consider this alarming landscape. Governors today act like glorified agents of the ruling party, not constitutional umpires. Speakers suspend opposition en masse but remain mute when ruling party members breach decorum. Investigative agencies are now enforcers of vendetta. The judiciary, with a few honorable exceptions, far too often whispers when it should roar. The balance of power has tilted into an abyss, and constitutional silences are being exploited with constitutional impunity. We must reflect, how did we reach here? And more importantly, how do we reclaim our republic? First, we must stop pretending that this is business as usual. What we are witnessing is not a mere aberration. It is a design, a calculated, organized design. This is not a temporary deviation.
It is an ideological project. The project is simple: to convert democracy into dominance, pluralism into polarity, and the Constitution into a convenience. The ruling regime has perfected the art of constitutional mimicry, where they use the language of the Constitution to undermine its very essence. They hold elections but erode institutions. They appoint judges but question judicial independence. They sing Vande Mataram but jail young voices. They lay claim to Ambedkar but bulldoze the very rights he stood for. They quote Ambedkar at dawn and crush his dream by dusk. This is not nationalism. It is narrative warfare. देश से प्रेम का मतलब ये नहीं कि सरकार से सवाल न हो. देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि हक की आवाज दबा दी जाए. और संविधान का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सरकारी किताब बन जाए. As a constitutional lawyer, I can tell you this: a democracy dies only when tanks roll out. Not only when tanks roll out, I'm sorry. It dies when institutions cave in. When constitutional functionaries become partisan puppets. When media becomes a megaphone, not a mirror. When courts begin to delay what they dare not deny. When dissent is sedition, protest is provocation, and every question is anti-national. You know then that the Republic is on a ventilator. We must also address this farce of federalism, and we have a session today on federalism in the afternoon. The center today treats states not as partners in progress, but as colonies of compliance. Schemes are launched without consultation. Funds are withheld with political bias. Elected governments are overthrown through money, muscle, and manipulation. This is not cooperative federalism. It is coercive federalism wrapped up as propaganda. So what is the pathway ahead? We are also supposed to talk of pathways today. It must begin with political courage and constitutional clarity. We must reclaim Parliament not as a place for paper bills, but as a theatre of true debate. We must demand from our judiciary not just interpretation, but intervention. We must protect the media not by controlling it, but by freeing it from fear and favor. And above all, we must connect the Constitution to the common man. The Constitution cannot remain the concern of lawyers and academics alone. It must become the lived experience of every farmer, every woman, every student, every worker. And this is what Rahul Gandhi has talked about time and again. Rights are not meant to be read, they are meant to be realized. It is the duty of the Congress party to ensure that from Kashmir to Kanyakumari, from Kutch to Kohima, every Indian feels the pulse of the preamble. Let me say this with clarity. The fight to save the Constitution is not a legal battle alone. It is a moral struggle. And it is the time we fought it. It is time now to fight it, not with caution, but with conviction. Not with whispers in drawing rooms, but with roars on the street. Not just through statements, but through sustained satyagraha. This is not a moment to lament. It is a moment to lead. Let our message from this particular event today be loud and clear. We will not allow this constitutional coup to succeed. We will not allow India to become a nation of one voice, one party, one ideology. India is not a painting in monochrome. It is a mural of many millions. Erase one hue and the canvas will crack. We believe in the Constitution, in its promise, and we believe in our ability to defend it. संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कसम है, और ये कसम कांग्रेस ने सबसे पहले उठाई थी, और जब जरूरत पड़ेगी तो सबसे आगे भी कांग्रेस ही खड़ी होगी.
So let us rise not as opposition, but as the original vision. Let us speak not just to win debates, but to win back the nation. Let us act not for political returns, but for constitutional redemption. Let it be said in the annals of history, when the Constitution wept, it was the Congress that wiped its tears. When democracy bled, it was the Congress that bandaged its wounds. And when the Republic trembled, it was the Congress that stood firm like a rock. Jai Hind, Jai Samvidhan, Jai Congress. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जिन संस्थाओं के ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है वही लोकतंत्र को तहस नहस करने में जुटी हुई है और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिफोर वी मूव फर्दर, देयर इज अ स्मॉल वीडियो। Before you go ahead, very well. After the video, Madam Sonia Gandhi talked to me personally more than once and then sent a very nice message, which I will ask Salman Khurshid ji to read. But after the video, let's have the video first. So we have a small video from the civil society. What do they say about this event, the Constitution? Can we please play the AV? Hi, I'm Dr. Trishant Simlai, an incoming associate lecturer at the University of Cambridge. In 2024, I published a paper that looked at how digital surveillance technologies that were meant for wildlife monitoring were being used to infringe the rights of local communities that live alongside the Corbett Tiger Reserve. I am very thankful to the AICC and its law department, and I hope that they continue to fight the good fight. Namaskar. On behalf of the All India Christian Federation, I wish to convey our heartfelt gratitude to the All India Congress Committee's Law, Human Rights and RTI Department. We are especially thankful for the valuable support extended in matters concerning reservations for minority communities, particularly Christians. Through these collective efforts, we believe the path towards greater social justice and equitable rights for minority communities is being made clearer and stronger. I'm the founding editor of the Reporters Collective. The Reporters Collective began in 2019 by breaking the electoral bond scam, bringing out the document that showed that the government had done this all illegally. There aren't too many lawyers in Delhi who have both the mind and the heart to help journalists like us. They've looked at our work, made sure it's pinpoint accurate, and they have done it innumerable number of times pro bono. From my experience of last 25 years, I can vouch for it. It's partners like these who help make sure press remains free despite all the challenges that we face today. Hello, Namaste. I'm Yashoda Hakrankar and I'm founder and director of Samvedana Foundation. Samvedana Foundation is a charitable trust and we are working for people with epilepsy. I feel that people with epilepsy have fundamental rights to get an insurance. We are normal people and I feel that society should treat us as normal people. I got a very good support from Advocate Khan and his team and they are helping us, they are voice of us in the Supreme Court. We have filed an PIL in Supreme Court and we are hoping for the best. My name is Joel Riang. I am from Tripura and I would like to thank the Law Department for helping us in our movement. For a greener tomorrow, Noble Cause Foundation fights for environmental justice, but legal battles can silence voices. Thanks to AICC's pro bono legal support, we filed a landmark PIL in the Supreme Court on critical environmental issue. मैं राम नरेश पासवान, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की ओर से जब भी रेल कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर संकट आता है, तब कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से राहुल गांधी जी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। इस बार भी हमारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराकर और हमें हर संभव सहायता देकर
उन्होंने एक बार फिर यह सिद्ध किए हैं कि हर वर्ग की आवाज को महत्व देते हैं। Hello, my name is Apar Gupta. I'm a practicing lawyer and the founder director of the Internet Freedom Foundation. We as an advocacy organization work on mitigating the harmful impacts of digital technologies on the rights of ordinary Indians, which are guaranteed under the Constitution of India. Here I would like to compliment Mr. Muhammad Khan and also several other people associated with the AICC's legal cell and also the Congress party for recognizing the urgency as well as the need to safeguard digital rights. Collaboration, this outreach and this support for civil society is comes at an essential point in time in India where there is a shrinking of civic space. May I now request Shri Salman Khurshid ji to please come up on stage. हम सब की अभिभावक, हमारी प्रेरणा स्रोत और हम सब का मॉरल कंपस आदरणीय कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक संदेश है जो वो आपके बीच में पढ़ेंगे। This is the message from the chairperson of the Congress Parliamentary Party, Srimati Sonia Gandhi. The Constitution of India is more than a legal charter. It is the moral foundation of our democracy, built on justice, liberty, equality, and fraternity. It was shaped through the sacrifices and vision of the Indian National Congress. Even before independence, the Congress Party imagined a constitution by Indians, for Indians. From the Nehru Report in 1928 to the demand for a constituent assembly in 1934. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru laid the groundwork, and Dr. B.R. Ambedkar, as chairman of the drafting committee, gave form to these ideals. He warned that without social and economic justice, political democracy would be just a top dressing. The Congress recognized this and acted on it, expanding rights, strengthening institutions, and upholding dignity and inclusion. Today, the Constitution is under siege. The BJP RSS, which never fought for freedom or upheld equality, now uses its power to dismantle the very framework it long opposed. Their ideological forebears glorified Manusmriti, rejected the tricolour, and envisioned a Hindu Rashtra, where democracy is hollow and discrimination is the law. In power, they have eroded institutions, criminalized dissent, targeted minorities, and betrayed Dalits, Adivasis, OBCs, and the working poor. Now they seek to erase socialism and secularism, pillars of Ambedkar's vision of equal citizenship. This is not reform, but an ideological coup, replacing our democratic republic with a theocratic corporate state serving the powerful few. India yearns for the inclusion, just and democratic nation envisaged by our freedom fighters and constitutional makers. That is what our Congress party stands for and fights for. We will oppose every attempt to undermine the Constitution in Parliament, in courts, and on the streets. This is not just political, it is our ideological commitment to defend every Indian's dignity. I commend Dr. Abhishek Manu Singhvi and his team for reigniting this vital conversation. Our mission is clear: to reclaim the Republic and protect the rights of each and every person. New Delhi, August 2nd, 2025. Thank you very much, Shri Salman Khurshid ji. बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं।
आपको अपने नेता को सुनना है, उसके लिए थोड़ा सा अनुशासन बनाना होगा। Honorable Kharge ji, Siddaramaiah ji, Revant Reddy ji, Sukhwinder Singh Sukhu ji, Abhishek Manu Singhvi ji, senior leaders on the dais, my lawyer friends, I'd like to welcome all of you here today. नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। So, you know, I was thinking what to say to you, the legal fraternity. And something came to mind. You know, as a politician, largest chunk of our job is meeting other politicians. And when you meet a politician, as many of you must have done, he will spend a lot of time talking about peripheral issues, half an hour, 45 minutes, and then eventually, right before he's ready to leave, he'll come to the point. You know, so it's quite frustrating for me. This is the difference between me and my sister. She has much more patience on this front, so she'll listen, you know, for half an hour, 45 minutes. And I'm thinking, okay, listen, you've come here to tell me something. You know, cut out the suspense. Tell me why you've come. And this sometimes comes as a shock to us politicians. Because also there's another thing going on. They also need the world to know that the meeting was 1 hour long or 2 hours long. Now, you're exactly the opposite. So, your time is expensive, unlike ours. So you come in and you instantly say what you have to say. And then on the other end of the spectrum is Dr. Singhvi, who is, you know, I've also dealt with a lot of lawyers, but he is like a laser beam. He will get to the point instantly, and he will cut exactly to what the issue is. And I've got, I don't know, I've lost count, but I think somewhere around 30, 32 cases. And so I discuss, you know, these cases with him. And it's very refreshing because it's literally, Dr. Singhvi, what do you think? And in 30 seconds, he's told me the entire, everything I need to understand has been delivered to me in 30 seconds. Now, it's important that you know who you are. You know, in our tradition, in the Eastern tradition, religious tradition, spiritual tradition, what is important is that you understand who you are. In the Western tradition, it's important that you understand everything around you. But in our tradition, it's important that you understand the self and you understand yourself and your own structure. So it's important that you know who you are. First of all,
the Congress party you're the people who started the Congress party. So the Congress party was essentially lawyers, right? And Singhvi no, and you need to be reminded of this because, and I'm not just talking to you, I'm talking to every lawyer in this country. We would not have got freedom. We would not have got freedom if the lawyers of this country had not fought for freedom. All this talk about constitution, this would not be here if it had not been for lawyers. You mentioned, Singhvi mentioned Gandhi ji, Nehru ji, Patel ji, Ambedkar. Those were the top 5 or 6 people. But if you actually look at the Congress party in those days, there were other people, thousands and thousands of other lawyers who were operating at a lower level. So it was, the freedom movement was actually fought in large measure legally. Right? So you are the people who are the backbone of the Congress party. And you are also the people who envisioned this constitution. If you had asked, if you had asked people who did not understand the law to frame this, it would be impossible. Right? So it was lawyers, it was the legal mind, it was the legal fraternity that built this entire architecture. And why am I telling you this? Because it is the architecture that you built that is being destroyed today. And it is being systematically unraveled on every front. Some visible in front of our face and others hidden. I've been speaking recently about the election system. I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. It went on for some time. There was a conversation, but I could never speak because there was no proof. So whenever we spoke, people said, well, where's the proof? And then something happened in Maharashtra, where in the Vidhan Sabha we won the election, hands down. In the Lok Sabha we won the election, hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. We found it in Maharashtra. Clearly, 1 crore new voters show up between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Bulk of those votes go to the BJP. But still, we didn't have clear proof. So when I would even mention it to our allies, that look, there is clear cheating that has happened, my allies would
me, yes, we can see that there is cheating that has happened, but we don't have proof. And now I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist, that it has disappeared. It has taken us 6 months, 6 months of non-stop work to find this proof. Why? Because the Election Commission does not give us electronic versions of the voter list. It gives us paper versions, and you'll be shocked to know, as I was, that when they give booth-wise paper versions of the voting list, that document cannot be scanned, it cannot be copied. Meaning you put it into a scanner, nothing comes out. Why would the Election Commission scan protect, copy protect the voter list? Now, you'll be shocked at the amount of detail we've gone into. And you will see, with no doubt, zero doubt, how a Lok Sabha election is stolen. Six and a half lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper, where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. We did not have proof, so we could not make these type of statements earlier. But I'm making this statement confidently because I have 100% proof now. And whoever I have shown it to has fallen off the chair. Literally, they said, how can this be possible? Well, it is possible. It is happening. Right? Who is going to fight this battle?
Only you people can fight this battle. Frankly, we non-legal people don't even know how to fight this battle. We can fight the political battle. We can fight the battle on the streets. We can fight in the villages. We can fight in the city. We can't fight in the courts. We don't know how to. And so, you are the people who have to defend the Constitution in the courts. You know, I had a document. We had a document some years back on the Rafale deal. Randeep is looking at me. Document that said clearly, black and white, that the Prime Minister office and the NSA have interfered in the Rafale deal and damaged the Rafale deal. This document itself would have brought down any government in any country of the world. Nothing happened. Nothing happened. You know where the document went? You know where the document died. Nothing happened. I'm fighting 30 cases. Anyone who fights the regime, any political person, anybody who works in the NGOs, civil society knows that the moment you oppose, you will be attacked. You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? And wherever you look, the problem exists. I mean, I've said it clear as day here, that we have 100% proof. Watch the newspapers and the media tomorrow. They'll be talking about Bollywood, about how, you know, about how there was a fantastic dance, amazing solar eclipses taking place, something they'll come up with. And so this is a full-scale attack. And it's not just an attack on the Constitution. Because this book is a manifestation of India's identity. It's a manifestation of our history, of our culture, of our tradition, of our religion. This is not written in 1947, in 1950. This is 3,000, 4,000, 5,000 years old. Buddha speaks through this book. Narayana Guru, Basavana, Ambedkar, Periyar, everybody who's been anybody in this country. Right? Anybody who's been, you look, anybody, and in every state there are there. In Assam, Gaurav will tell you.
right? In Tamil Nadu, in Karnataka, in Uttar Pradesh, Kabir, there's a list. So this is not something that we dreamt up in 1947 or 1950. This is something, this is our blood. And how dare you attack our blood? Right? So we are not just, we must remember, we are not just defending this red book, this legal document. We are defending our way of life. Right? Tell me which Indian tradition, which Hindu tradition says that you should beat up a Muslim child? Where is it written that you should lynch someone? Which tradition of ours says it? There's not a single tradition of ours that says it. Our tradition says everybody is the same. So these people, they're not attacking our politics. They're attacking us. They're attacking our history. They're attacking our religion. For anybody who understands Hinduism, anybody who has gone into depth in Hinduism, they're attacking Hinduism. And frankly, yesterday my sister said to me, now, you know, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा. She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. You please understand that's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. So this is the difference between us. You see, when the British came, you stood up and said, we will defend our tradition, our culture, and our way of life. And the RSS said, sir, please tell us what we should do. Sir, please tell us how we can help you. And this is the truth. If it was not the truth, I wouldn't say it. It is the truth. People don't like it, but it is the truth. Gandhiji spent most of his adult life in jail. Nehruji spent most of his adult life in jail. Sardar Patel spent most of his adult life in jail. Why? Because they opposed the British. Show me the RSS leader who did it. So they fear the Congress. The true Congress. You see, they fear the true Congress. And every single one of you have the true Congress inside you.
What is the Congress? I'll tell you what the Congress is. What is the Congress? The Congress is, you know, a famous American general, General Patton, who fought in World War II, was asked, what is the difference between a hero and a coward? What do you think his answer was? He says 5 minutes. He says the hero waits 5 minutes and the coward runs away. Right? So the Congress is just simply bravery. It's just bravery. When somebody comes in front of you, says something to you that you don't agree with, and you have the courage to stand up and say, sorry, I don't agree with it. I will not accept it. That's the Congress. Up now, there's another element. You can be courageous and be wrong. Doesn't mean anything. We are going to be courageous, but we're always going to be defending the truth, not defending some lie. And then the final thing, most beautiful thing, we are going to do it non-violently. So we will not, no matter what you do, you cut our arms off, we will not act violently towards you. So these three things, the ability to tell the truth, courage, and then not letting your anger overtake you and go into the zone of violence. This is the Congress. And if you want to define the BJP, just do the opposite. No, बड़ी अच्छी तरह फिट होता है. If you don't have the courage, you deal in untruth, and you're violent, there you are. That's the difference. So I'd like to finish by saying, you're an inspiration to us. I mean, I know when I am navigating, when I am in the कहीं भी डाल दो मैं नेविगेट कर जाऊंगा, बट कोर्ट में मैं नहीं जानता क्या करना है. मुझे कहते हैं, चीमा जी बैठे, मुझे कहते हैं भैया ये बोल मत देना. अभी भी देख रहे हैं, इज लुकिंग इन माय डायरेक्शन एंड सेइंग ये कुछ मतलब उल्टा सीधा. Right? So I don't understand how to navigate that, and you help us navigate that. Singhvi ji helps us navigate that. Chidambaram ji, Kapil Sibal ji is not here, but he also helps us navigate that. You know, so thank you very much. And finally, Singhvi ji, I had an idea while I was sitting there, which was that, you know, every hospital has a blood bank. When you need blood, there's a blood bank. And these days, because of the nature of the RSS and BJP, legal time has become like blood, right? Many people need this. For the Congress people, it's easy. You know, Sukhuji, Singhvi ji, all the top people are there. I need legal services. I can pick up the phone and call Singhvi ji, Chima ji, Chidambaram ji, possibly even Kapil Sibal ji. Right? And of course, Conclave ji. But everybody can't do this. You know, some Congress worker somewhere, he can't do this.
Or if you're not Congress, somebody who's being attacked, civil service person being attacked, can't do this. So my suggestion to you is build, get your thousands of lawyers to say, listen, we commit X amount of time to defend the Indian Constitution, and anybody who wants access to that time can come. ये मैं जानता हूं आप करते हो, पर इसको आप सिस्टमैटिकली कीजिए. ये आप इनफॉर्मली करते हो, बहुत अच्छी तरह करते हो, बट इसको आप फॉर्मली कीजिए. That everybody knows that if I need legal time, I'm being attacked. Maybe I'm in Manipur, maybe I'm in Chhattisgarh. I need legal time. There is the Congress legal department that I can turn to, and they will give me this 21st century blood legal time. It's an honor for me to come here. It's a pleasure for me to come here. Thank you, Singhvi ji, for giving me this opportunity to talk to so many lawyers at the same time. Thank you very much. All the best. Thank you very much, Rahul ji, for that very inspiring address and for being the crusader of people's rights. आपने इस देश को मोहब्बत सिखाई और आपने जब 2024 के पहले संविधान हाथ में उठा लिया तो ना सिर्फ सरकार को ललकारा बल्कि इस देश में न्याय की उम्मीद जगा दी और लोकतंत्र के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है and the way you are fighting it brings hope, and we hope that India's republic and our democracy will remain secure. Thank you very, very much for that. There are very few people who walk with the courage of their convictions like you do. Ladies and gentlemen, one of the most towering figures in Indian politics, he embodies resilience, compassion, and an unwavering commitment to social justice. He truly stands for what rising through the rank really means. In his remarkable journey from a bloc president to the elected president of the Indian National Congress, he has overcome profound personal tragedies and societal challenges. In fact, he started his political career as a lawyer for the trade unions. As the party's president since 2022 and leader of the opposition in Rajya Sabha, Shri Kharge ji has demonstrated exceptional political acumen, steering the party with wisdom in a complex political landscape. His commitment to social justice reflects through the setting up of the Siddharth Vihar Trust and the Buddha Vihar in Gulbarga. संविधान में उनकी आस्था और लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सब के लिए एक आदर्श है. सदन के अंदर और सदन के बाहर उनकी वाक्पटुता, उनके तार्किक वक्तव्य और उनकी निर्भीकता के सभी कायल हैं. Without wasting any more time, may I now request the Honorable Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, to deliver the Chief Guest's address. Pathways and Perspective, 2 August 2025. इसका जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और जिसकी तैयारी बड़ी जोर से आप लोगों ने किया है, इसीलिए पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ. अभी आपने राहुल गांधी जी की तकरीर सुनी और बड़े आज जरा जोश में बहुत थे वो कि पूरा लॉयर्स को देखते ही बहुत जोश आ गया, क्योंकि नहीं तो
जोश ज्यादा आया, इसलिए कि मेरे संविधान को बचाने वाले लोग यहाँ पर पूरे भर गए हैं। इसीलिए हमारे युवा नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी इस सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत से चीफ मिनिस्टर्स सिद्धरामैया जी, रेवंत रेड्डी जी, सुक्कू जी और फॉर्मर सीएम्स और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, और आज राहुल गांधी जी ने बार बार नाम लिया क्योंकि उनको थोड़ा समाधान करने के लिए हमेशा प्रियंका गांधी जी की आवश्यकता थी, इसलिए प्रियंका गांधी जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी और मोहम्मद खान, आप सभी ने इस सभा में शामिल हुए हैं। इसीलिए मुझे तो बड़ा आनंद हुआ कि इतने देश के सारे लॉयर्स और खास करके हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को संबंध रखने वाले लोग जब यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लीगल सेल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और पाथवेज एंड प्रोस्पेक्टिव्स हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, जैसा कि इसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया और सिंघवी जी ने भी किया, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये प्रत्येक भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देता है। लेकिन आज यही संविधान बड़े खतरे में है। सत्ता में बैठे नेता बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का इरादा है कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटा दी जाए। इतना ही नहीं, अगर उनको लास्ट इलेक्शन में, इन्हें 2024 के चुनाव में 400 सीट मिलते तो वो निश्चित रूप से संविधान ही बदल देते थे। लेकिन ये आपकी ताकत है, इस देश की जनता की ताकत है, और करोड़ों जो मतदार है, वोटर्स है, उन्होंने दिशा बदल दी। और मैं ये कहूँगा कि जो 400 पार कहते थे, उनके मुंह पे तमाचा मारा। यही हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसका क्रेडिट राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा ही नहीं। संविधान बचाओ की जो मुहिम उन्होंने चलाई, और वो संविधान का किताब हर जगह उन्होंने जो लोगों के सामने पेश किया, उससे आज 400 सीट उनको मिल नहीं पाए। संविधान जो खतरे में था, उसको अगर किसी ने बचाया तो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने बचाया।
हम सब लोग साथ में काम करते हैं और जब एकता के साथ काम करते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, ऐसा ही हम कुछ साधते हैं। पहले कहा कि संविधान में से, प्रियम्बल में से सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यही लोग जिन्होंने अपने पार्टी के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द रखा है, आप बीजेपी आरएसएस के चाल को समझते हैं। अगर आप बीजेपी की जो उनका पार्टी का संविधान है या उनके पार्टी का जो ये है अपना क्या कहते हैं, उनके पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल संविधान में है वही शब्द पूरे उनके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो बाहर कहते हैं कि हम सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को निकालेंगे। भाई आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत आपके पास नहीं है जो ताकत हिंदुस्तान के वोटरों के पास है। तो दोस्तों, ये जो उनका दोहरा चेहरा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लाके लोगों को गुमराह करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेवारी तो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की होती है, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब एक न्यायाधीश धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द से संबोधन करे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे या मीडिया पूंजीपतियों के माध्यम से नियंत्रित करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। जो न्यायाधीश पार्टी को टीका करता है, धर्म को टीका करता है और एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बात करता है, वो न्यायाधीश नहीं है। वो तो देश के लिए, संविधान के लिए खतरा आरएसएस का न्यायाधीश है। मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को और दलितों के साथ भेदभाव आम होता चिकन की बात करते हैं, मुगल की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, और समाज को बांटने की बात अगर कोई करता है, इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा करता है। अरे उसको संविधान बचाने के लिए लोगों ने चुन के यहां पर लाया, और संविधान को, जो संविधान अनुष्ठान में लाने के लिए उनको लोगों ने चुना। लेकिन संविधान को अगर कोई कुचल रहा है, ये प्रधानमंत्री कुचल रहे हैं, ये बीजेपी कुचल रही है। इसीलिए आपकी जरूरत बहुत है, क्योंकि जैसा अब हर जगह वोटिंग का रिवाइवल करने का चल रहा है, और खास करके इसका मुहिम भी राहुल गांधी जी ने उठाया है।
कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाया, जैसा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए। 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। आप देखिए सर, स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव के नाम पर लाखों गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। बिहार में करीब, आज के पेपर में आप देख सकते हैं, है आगे यही पूरे देश में उन्होंने खुद ये लिस्ट पब्लिश की है। 7 करोड़ वोटर में अगर 65 लाख या 1 करोड़ के करीब वोट घटते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये सोच समझ के उनकी चाल है। गरीब लोगों को वंचित करना, अल्पसंख्यकों को वंचित करना, और जो थके हुए लोग हैं या जो बहुत ही अपने हकूक का, ऐसे लोगों को काट छाट कर आज बिहार का वोटर लिस्ट बाहर निकला है। भाइयों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को 1 वोट 1 वैल्यू की अधिकार दिया है। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, निर्माताओं और कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या ये लोग तो उस वक्त थे नहीं ना? 1-2 थे। अगर ये वोट तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी के संविधान को ये मिला है। और डॉक्टर अंबेडकर 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा, क्या कहा? फ्रेंचाइज is a most fundamental thing. It is a most fundamental thing in a democracy. कोई भी व्यक्ति जिसे हमारे संविधान के हिसाब से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी लोकल गवर्नमेंट के प्रिजुडिसेस या किसी ऑफिसर की विम पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये उस वक्त आर्टिकल 289 जो ड्राफ्टिंग कमेटी का आर्टिकल, उसी वक्त उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आके, या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल लीडर्स हो, ऐसे लोगों के दबाव में आके अगर आप वोटर्स को वंचित करते हैं वोट से, तो ये अच्छा नहीं। उसी वक्त उन्होंने कहा है। तो जो संविधान सभा में चर्चा हुई, उसके खिलाफ काम आज ये गवर्नमेंट कर रही है और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन को तो बहुत बड़ा लेसन राहुल जी ने दिया है। उनको कहा कि आओ देखो, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाप बेचारा वो भी परेशान है, क्योंकि अब वो कहा, सच कहा तो वहां रह नहीं सकता। अगर झूठ बोला तो लोग छोड़ते नहीं उसको। अब राहुल जी जैसे
नेता लोग उसके पीछे पड़े, वो घबराया और बात में उन्होंने कहा, राहुल जी ने, तुम पद पे रहो या न रहो, तुम रिटायरमेंट होने के बाद भी हम आपके पीछे लगेंगे। अब ये राहुल गांधी जी जब ये बात कहे तो वो भी परेशान है। हम क्या करना, इधर तो झूठ बोलो, इसकी आदत बीजेपी ने डाली है और सरकार हमको धमकी दे रही है। उधर रूल्स के मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे या नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके बीच वो भी लोग थोड़ा परेशान है और हमको तो काम करना है और इससे आगे बढ़ना भी है। आज बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की वजह से ही संवैधानिक अधिकार खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता समझी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, आईडी, राशन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। इसको करने के लिए उन्होंने ओरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, नहीं करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग अगर हम वोटर लिस्ट में डालेंगे, ये लोग देश के हित में कांग्रेस को ही वोट देंगे, ये समझकर उन्होंने इन लोगों को वो निकाल रहे हैं। ये गलत है। एक बार वोटर लिस्ट में लाओ, वो डेमोक्रेसी में किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन चुन के ये काम कर रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा, और हम ये कहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। जहां भी है, उनके शब्द में बोलूंगा, पकड़ लेके लाएंगे। उन्होंने कहा कहीं भी अगर छुप गए तो भी हम पकड़ के लाके उनको पूछेंगे ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आज देश की परिस्थिति क्या है। आज देश की 1% आबादी के पास 40% संसाधन है, धन है, पैसा है, और आज हायर एजुकेशन तो गरीबों के लिए सपना बना है। 6 लाख 60 लाख फीस बच्चे, गरीबों के बच्चे कहां से लाएंगे। और हमारे संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपने कहा है कि शिक्षा सबको मिलेगा, सबको देंगे, फ्री एजुकेशन। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट लाया शिक्षा का, फ्री एजुकेशन का, लेकिन आज ये गवर्नमेंट एजुकेशन भी बेच रही है और गरीब के पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल खोले थे वो भी एक बंद कर रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट लोगों को इसका फायदा हो, गरीब लोग उससे पढ़ने से वंचित हो, ये उनका फैसला है। तो हमको ये सब चीजें बताना है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षण के लिए, न्याय के लिए हम सबको कुछ करना है। तो इसीलिए मैं आप सभी लॉयर से भी इसके बारे में भी आपको ज्यादा, आज विपक्षी सरकारों को गिराकर अल्पमत की सरकारें बनाना, नेताओं पर झूठे मुकदमे चलाना, प्रश्न लोगों को जेल में डाल देना, आरटीआई कार्यकर्ताओं का हत्या करना और आरटीआई कानून को कमजोर करना, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल बन गया है। ये उनके शब्द ही है, न्यू इंडिया न्यू नॉर्मल। वही
आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है, इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने है। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम हो पूरे आरएसएस के इंस्टीट्यूशंस से कर रहे हैं, उनके संस्था से कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को वो दे रहे हैं और देकर सच झूठ कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस को फायदा हो, ये काम वो कर रहे हैं। तो जब आवाज उठाते हैं उनको जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर उनको हरास किया जाता है, तो मैं आप विनती करूंगा जो भी लोग आप सभी लोग एक होकर हमारे साथ खड़े होंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आपने गौर किया होगा कि सांसदों को बोलने नहीं देते हैं और राहुल गांधी जी को, मैं यहां पर राज्यसभा में हूं, माइक नोटिस देने के बाद भी जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं या नहीं किसी रूल्स के तहत हम बोलना चाहते हैं, हमको बोलने ही नहीं देते। हम जनता की आवाज और जनता के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि देश में बहुत से समस्याएं हैं। हमारे सरकारों को पैसे नहीं देते, कोई भी स्कीम में एक पैसा जल्दी नहीं वो रिलीज करते और हमारे लोग गिड़गिड़ाते और हमारे ऊपर दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद रद्द कर रही है, पैसे नहीं दे रही है, अलग अलग नाम से वो स्कीम के नाम रख के वो अपने लोगों को कुचल रही है। इसीलिए बहुत से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो परेशान है और ऊपर से वही लोग पूछते हैं कि काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हो या हमारे पार्टी, काम करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन सरकार उनको मदद नहीं कर रही। भाइयों, और अपने गौर किया होगा, संसद में विपक्षी सांसदों को तो एक तरफ बोलने नहीं देते। सरकार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के माध्यम से पहले के, अभी ये भी जरा इनको देखना पड़ता, लेकिन परखना पड़ेगा कब क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं हमारे पास। तो लोकसभा में तो कंटिन्यू है। सांसदों को आवाज दबा रही है, रिकॉर्ड सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। बीजेपी और मोदी जी बहुत खुश थे जब पहले के चेयरमैन थे हमारे, वो जब हमको बाहर निकालते थे, दबा देते थे, कुछ कुछ हमारे खिलाफ बोलते थे और सस्पेंड करे। एक तो हमारे महिला एमपी को पाटिल को 7 महीने, एक नहीं 2, ये इनकी डेमोक्रेसी है। और ये सब कौन किया, ये चेयरमैन नहीं किया, लेकिन एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी अहमियत क्या है, ये एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, मेरा भी कुछ है,
ये समझने वो लगे। उनका कार्यकाल इतिहास में दर्ज होगा और आगे याद किया जाएगा, तो वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे। जब वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे, वो रूल्स की तहत अपने आप को असर्ट करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद जज शेखर यादव और जज यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मोशन स्वीकार करने के बाद में इनको ऐसा लगा ये वीपी, ये चेयरमैन हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है, ये सब हमारे खिलाफ जाने वाला है, इसको पहले निकालो। तो उन्होंने उनको थ्रेट किया, या तो तुम विड्रॉ करो जो एडमिट किए हैं मोशन, या तो विड्रॉ करो, या तो आप रिसिग्नेशन दो। तब ये धमकी देने के बाद उन्होंने कहा मैं विड्रॉ तो नहीं करता, मैं रिसिग्नेशन देता हूं। तो उन्होंने रिसिग्नेशन दिया। तो ऐसा दबाव हर एक पर वो डालते हैं और डाल रहे हैं, लेकिन वो दबाव कांग्रेस पे नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे कांग्रेस के लोग तो इस देश को आजादी दिलाए हैं, मरे हैं, सूली पे चढ़े हैं, वो डरते हैं। देश के एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, और जो लोग, जो फैमिली देश के एकता के लिए जान देती है, क्या ऐसे लोगों को, छोटे मोटे लोगों को डरती है? अभी बोल रहे थे राहुल जी, किसी एक वकील ने उनको बुला के धमकाया, ऐसा कुछ? हाँ, अरुण जेटली, ठीक बोले। तो अरुण जेटली डरा। अरे वो किसी को डरने वाले ही नहीं, अब अरुण जेटली को क्या डरेंगे? क्योंकि सच जो बोलता है और सच्चाई पे जो चलता है, उसको कोई डरा नहीं सकता। और डर भी नहीं सकता। और डरेंगे क्यों? अगर हम कोई गलती करेंगे, अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम किसी को सताएंगे उनके, तो उस वक्त अरे भाई हमने गलती की थी, उन्होंने कहा। यहां गलती नहीं के लिए वो बोलते हैं, तो उनका काम होता है सुनना। लेकिन मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं करते और उनका इस्तीफा मांगा। आप बेचारे वो अब घर में बैठे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अच्छा भी नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा तो भी मैं माफ़ी मांगता हूं उनसे, क्योंकि उनकी सुनते, बीजेपी का सुन के, आरएसएस का सुन के उन्होंने गलती की, उन्होंने खुद गलती नहीं की। तो जब आदमी खुद गलती करता है इंटेंशनली, उसको हम ब्लेम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो उनके तरफ से गलती की, उनको बचाने के लिए झूठ बोला, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं आज ये भी आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, किस ढंग से वो चेयरमैन को भी डराते हैं। अब दूसरे लोगों को तो कितने डराए होंगे उन्होंने। और एक कल ही मैंने एक उपसभापति को पत्र लिखकर सदन के अंदर हमारे पास सीआईएसएफ के मौजूदगी के बारे में आपत्ति जताई। अरे कभी पार्लियामेंट में कोई लोग, बाहर के लोग नहीं आ सकते, उनकी सिक्योरिटी रहती है और वो हमारे को देखते हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन
उन्होंने ऐसा किया कि बाहर के लोग को हस्तक्षेप करने के लिए सदन में लाया। ये लेटर भी मैं कल लिखा हूं, आज आप देखे होंगे पेपर में भी आया है। और इसीलिए उस वक्त संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की स्थापना की। इसके अधिकारों को संसद के अनुरूप काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका कंट्रोल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के हाथ में था, लेकिन वो निकाल कर आज वो लोग CISF को अंदर बुला रहे हैं। ऐसा भाग के आते हैं कि जैसा कि टेररिस्ट को मार रहे हैं। टेररिस्ट को तो जल्दी मार नहीं सके, हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं अंदर घुसपैठ। हम ताजुब हो गए क्योंकि हमने नहीं देखा। 15-20 साल से पार्लियामेंट में हम आते हैं, देखे हैं, तो वो आते थे सफेद कपड़े पहन के, वहां के वॉलंटियर्स या जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे वो आते थे, वो मदद करते थे। लेकिन काले दर आ जाते हैं। अरे हम बोले क्या हो गया, कुछ बॉम्ब गिरा, क्या होगा, क्या टेररिस्ट अटैक जैसा उनके जमाने में पार्लियामेंट को हुआ ऐसा कुछ हुआ क्या? डर गए हम, क्योंकि ये पहली बार देख रहे ना हम, इससे पहले नहीं देखे। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में है। पार्लियामेंट का अधिकार उन्होंने लिया है, सब अधिकार ले रहे उन्होंने लेकर। CISF सीधा गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। उनकी तैनाती विपक्षी सांसदों को दबाने और डराने का प्रयास है। हम सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण किया और समतावादी समाज की रचना की। हमारी पार्टी ही इन मूल्यों को जीवित रख सकती है। हमें लोकतंत्र होगी, इस काम में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे संविधान बचाने की मुहिम ने लोकसभा चुनाव में जनता को जागरूक किया, जिसका जिक्र मैं पहले अभी किया था, जिसकी वजह से आज विपक्ष मजबूत स्थिति में है और हर चैलेंज को फेस करने की और आप और हम सब जब मिल के काम करते हैं तो हमको कोई डरा नहीं सकता। तो इसीलिए हमको ये देखना होगा कि एक तरफ न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना होगा। सरकार को समझाना चाहिए, कभी भी टकराव से, सरकार को ये समझना चाहिए कि कभी भी टकराव से समाधान नहीं निकलता। शायद वो समाधान चाहते ही नहीं है। राजनीतिक दलों और नागरिकों के साथ संवाद करना चाहिए, वो संवाद भी नहीं करते। पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाकर बात भी नहीं करते। और हमारे मोदी साहब तो वहीं बैठे रहते, टीवी देखते रहते अपने रूम में, लेकिन पार्लियामेंट में कदम नहीं रखते। क्या समझ में नहीं आया मेरे को। अरे आप टीवी वहां देखने के या अंदर आके विजुअल ये फिजिकल देखो ना, वो देखने को तैयार नहीं।
उनको क्या डर रहे मेरे को समझ में नहीं है। आप निडर हो ना, ठीक है, हमारा देश का नेता निडर होना चाहिए, वो सामने भी नहीं झुकना चाहिए। अरे तो इसीलिए कभी कभी बार बार मुझे याद आता है कि राहुल गांधी मोदी डरपुक है बोलते, वैसा बोलने में। तो मैं बोला नहीं साहब, डरपुक कैसा होता है, 333 सीट लाया एक बार कम से कम 273 सीट लाया, और इस बार गया वो फंस गया, और ये डरपुक कैसा होता नहीं। तो ठीक है, हमको डरा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में मेंबर हमारे, लोकसभा में हमारे ट्रम्प के सामने झुककर क्यों आप देश की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे स्वाभिमान को बेच रहे हो। इसीलिए राहुल जी ने कहा, आप अगर एक बार कहे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप झूठ बोल रहा है ये कहो, मैं मान जाऊंगा। ये पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, लेकिन आज तक मुंह ही नहीं खोले। मैं समझता हूं शायद ये श्रावण का महीना इधर करते ना, तो वो मौन व्रत रखे होंगे एक महीना, जब तक ये महीना खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा सेशन खत्म नहीं होगा, तब तक वो मौन व्रत रखे हैं। तो डर के नहीं, वो मौन व्रत रखे क्योंकि भगवान से आए ना, वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ये है, इसीलिए वो किसी को ये नहीं करता। तो इसीलिए ऐसा आदमी इस देश के प्रधानमंत्री बने, अगर ऐसा ही चला तो देश का तो दिवाला उठ जाएगा। और हम नहीं बोल रहे, दूसरे लोग भी बोल रहे। और जो राहुल जी ने कहा कि ये लोग दिवाला उड़ाने वाले हैं, दिवाला उड़ गया अभी, तो इसको हमको बचाना है। खुशी नहीं है, देश का अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हमारे बच्चों को शिक्षण नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को स्वास्थ्य का ये नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारी जनता मरेगी ना। हमारा तो 140 करोड़ जनता को अच्छा स्थिति में रखना हमारा भी फर्ज है, हम उसलिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा यही करते हैं, युवाओं को संविधान का विरासत का रक्षक बनाना होगा, उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर जवाबदेही के लिए प्रेरित करना होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया और हर नागरिक को वॉचडॉग की भूमिका निभानी होगी, तभी जीत हमारी होगी। इतिहास साक्षी है, सच हमेशा जीतता है, और सच अगर जीतता है तो हम सब लोग सच के साथी हैं। मैं श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी का और उनके साथियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और अपने को मौका दिया। और मैं आप सबको बधाई भी देता हूं कि आप देश के कोने कोने से आए हो, इसीलिए आप हमसे ज्यादा तकलीफ उठा के इस सम्मेलन में शामिल हो गए हो। तो आप सभी को इसकी सफलता का शुभकामनाएं।
और इसी के साथ सिर्फ 2 मिनट में आपका लेता हूं और अपने बात को खत्म करता हूं। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी और हमारे विरोधी लोगों का जिन राज्यों में शासन है वहां हमारे वर्कर्स के खिलाफ सच बोलने पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और उन्हें डराने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए उनके परिवार वालों को उसके ऊपर केस डालते हैं और उनको हरासमेंट करते हैं और उनको डिमोरलाइज करते हैं ताकि वो कांग्रेस के साथ न जुड़े। तो हमारे संगठन को मार पड़ती है इससे, क्योंकि लोग डरते हैं, अरे ये पुलिस में गए तो कोई पूछता नहीं, कलेक्टर के पास गए तो कोई पूछता नहीं, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग ही आगे पीछे देखते हैं और हमारे संगठन में वर्कर्स मार खाता है। हमेशा वर्कर्स आगे रहता है, वो मार खाता है, लेकिन बड़े बड़े लोग कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन मेरे को शुरू में लगा था तो मैं बोलना क्या नहीं बोलना छोड़ देता हूँ, अभी बोलना ठीक नहीं है इस संदर्भ में। छोटा कार्यकर्ता बेचारा क्या करे। ये शाह के वॉशिंग मशीन में गए, कोई राज्यसभा मेंबर बना, वो बड़े बड़े लोग हमारे पार्टी में बड़े उद्दे पे थे और कभी कभी मैं देखता था राहुल जी जब 2009 में मैं शुरू में आया था, उनके आजू बाजू में थोड़े वही लोग रहते थे, तो देखने के बाद मेरे को देखने के उन्हें घेर लिया। हाँ? हमारे जो लोग हैं आइडियोलॉजी पे जो विश्वास रख के लोग बैठे हैं, तो ये कब्जा तो ये लोग कर दिया, आजू बाजू यही लोग हैं। लेकिन बाद में हम 2014 में जब हम हारे हैं तब ऐसा छुटके जा रहा है, एक वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ आप लोग। हमारे कार्यकर्ताओं के सिवाय, हमारे वोटर्स के सिवाय आज उनके साथ खड़े हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने यही लोग कार्यकर्ता लोग थे। भारत जोड़ो यात्रा में कौन थे? हमारे लोग ही थे, हमारे लोग ही थे। इसी लोग चले गए, पीड़ा गई, कम से कम हमारा आइडियोलॉजी बच गया। तो ये शाह के वॉशिंग मशीन में चले गए, जी की लालच में गए, जाने दो, कोई परवाह नहीं। देश लीगल, मेरे साहब बहुत बड़े बड़े वकील भी हैं, मैं अपने और जिले उन
मैं आप धन्यवाद के साथ यही आपसे रिक्वेस्ट है